देवी और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। अभी अभी ये जो धुन आपने सुनी, इसका नाम है इंस्पिरेटो और इसका सृजन किया है मास्टर वारंट ऑफिसर अच्युतन ओके ने। एक बार तालियां बजाकर फिर से स्वागत करेंगे इस धुन के निर्माता मास्टर वारंट ऑफिसर अच्युतन ओके। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब तो है भाई भाई, प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कई धुन एक है, भाषा कई सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक कह तो सभी हम एक हैं, आवाज तो हम एक है। Please check the mic for the reverb feedback. Mit was ab? Michel में पाँच शे एक से मेरा कुछ नहीं ये महलस बगड़ा नहीं
10, 100. A fighter aircraft that can turn quickly, even at low speeds, is a nightmare for any adversary.
He's done it right on top of Dull, well inside the water. Just in case you were a little caught up earlier and missed some finer details of the maneuver, we will shortly have the loop tumble yaw, the spectacular loop tumble yaw once again for the lovely audience. And this time, the pilot will position the aircraft head on to the dais. In a right-hand turn, coming in straight in front of the dais. And there he pulls up into the blue yonder. Isn't she beautiful? Look at him go. That's the loop. Tumble. Wait for the yaw. And there he is. Give a huge round of applause for this particular display. Beautiful. Look at him go round. No fighter aircraft in the world can do this. Magnificent, ladies and gentlemen. No one can do this other than the Su-30. In a left-hand turn, Mishi is now positioning for the next maneuver, which is the slice maneuver. Keep your eyes on the mighty flanker. The pilot will showcase the aircraft capability to change direction in a short span of time. And there he pitches up, and here comes the slice. Like a hot knife through butter. Ladies and gentlemen, the Su-30 falling like a leaf and still looking beautiful. Round of applause, please. There you can see the tail slide maneuver. If you haven't seen an aircraft flying in reverse gear, this is perhaps your only chance to witness. Keep your eyes on the aircraft. Say goodbye to engine technology, say goodbye to aerodynamics. We have an aircraft which goes backwards. There you can see 25 tons of machinery and 2 humans stationary in the skies above you. And now, falling. The captain is now making the aircraft slide back, tail forward and vertically down. Now he will recover his aircraft, build up speed. He has to show you more. This maneuver displays the extraordinary performance of this aircraft and stability of engines in such an adverse and harsh maneuver. Ladies and gentlemen, it's a small arena, just the Dal Lake. Wait for him to reposition, and here he comes. Hold your breath. And now the icing on the cake is the vertical Charlie maneuver. And there he pulls up. You will see the pilot dispensing flares right there. Whoa, Huge round of wow, applause. wasn't that beautiful? Look at him go.
The Sukhoi 30 MKI is a Russian technology, but tailored for India, and inside her is a heart that is truly Indian. It is now time to bid farewell to the mighty flanker as she exits the arena. Give a huge round of applause for Group Captain Shobit Mishra and Flight Lieutenant Shiv Kumar Bhatkere for putting up such a wonderful display for the lovely audience of Srinagar. Our people first, mission always. Listen for the sound of our rotors, for the thunder of our engines, and watch as we soar and touch the sky with glory. As we enter our 89th year, I would like to compliment all air warriors for a job well done. देवियों और सज्जनों, In what has turned out आप to be an सबसे extremely दरख्वास्त है challenging year. कि हर समय अपना मास्क पहने The रखें IF is in the midst और of सोशल growth डिस्टेंसिंग का transformation, पालन करें। and we are changing the हम way we सब fight, कोविड महामारी से train, जूझ रहे हैं। and maintain. हमेशा Our की intense तरह focus on आवाम की integration, राहत के लिए both within the एयरफोर्स service सबसे आगे and with our रही। sister services. चाहे वो needs to एयरफोर्स continue. स्टेशन पालम का कोविड सपोर्ट सेंटर हो या दिन रात देश और विदेश से 7 समंदर पार राहत, वैक्सीन और ऑक्सीजन मुहैया कराना हो। इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में अब तक भारतीय वायुसेना 1700 से ज्यादा उड़ानें भर चुकी है। Surprise, surprise, surprise! After the enchanting display by the mighty Sukhoi 30 MKI, it's time now to paint the skies red and white. ऑडियंस में बैठे बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि अब तक आपने शो में फ्लाई पास्ट और सिंगल एयरक्राफ्ट एरोबैटिक्स देखा, पर अब जो आप देखेंगे वो आपको और भी एक्साइटिंग लगने वाला है। Very few countries in the world have a formation aerobatics team, and we are one amongst them. It takes high degree of skill, precision and continued training to fly as a formation. Today, this will be displayed by the Surya Kiran aerobatics team of the Indian Air Force. So sit back, hold tight as the action has just started. Mic check. Ladies and gentlemen, a very, very good morning. नव किरण का रथ सजा है, कली किरण से पथ सजा है, बादलों के अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी. Good morning, Srinagar. How are you doing? If you can hear me, please raise both of your hands in the air. Thank you so much for your response. We are the Surya Kiran aerobatic team, and it is a privilege to carry out a display in the Lake of Flowers. हमारी टीम ने 1998 में पहली बार डल लेक पे डिस्प्ले किया था और एक बार फिर 23 साल बाद 2021 में 5,500 फीट की ऊंचाई पर एक बार फिर लेकर आ रहे हैं आपके लिए सूर्य किरण एरोबैटिक टीम. एरोबैटिक्स हमेशा से ही इंडियन एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा रही है. हमने शुरुआत करी 1982 में थंडरबोल्ट्स टीम के साथ और इस टीम ने 1990 तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. This led to the genesis of Surya Kiran aerobatic team named after the rays of the sun, and they flew in Kiran Mark II military aircraft from 1996 to 2011. In 2015, the team was resurrected on Hawk Mark 132 aircraft, and this is the same aircraft that you will be seeing in the skies today. ये माहौल ये बाग बहार वुचित च दिलस मंज अकई आवाज नेरान दुनियाहस मंज अगर कुन जाय जन्नत च सुजाय छ ये सुजाय छ ये सुजाय छ ये. नमस्कार आदाब वादी कश्मीर
अस वनान सूर्य किरण एरोबैटिक टीम सन टीम आसमानस मज इत पट हवाई कारनाम करान जन आफ्ताब जिच तमे सून नाव सूर्य किरण सान टीम मज पायलट्स एरोनॉटिकल इंजीनियर्स कमेंटेटर्स डॉक्टर्स तो बाकी साथी यम जन पन्न पन्न कामन मज माहिर यम वजल जहाज तुह वन वुचूक तिमन वनान हॉक जहाज पन्न वंजन करियो थफ तो वलियो आज करो इस जन्नत किस यथ आसमानस मज वजुल रंग. We are the 52 Squadron, the youngest 9-aircraft aerobatic team in the world. Tied with an invisible string, the team will be presenting synchronous aerobatic maneuvers. Ladies and gentlemen, presenting the ambassadors of the Indian Air Force, the Surya Kiran Aerobatic Team. The team will be carrying out a display for 15 minutes and in 2 halves. The first half will consist all 9 aircraft flying together harmoniously and subsequently in smaller formations to get the thrill lower and closer to you. You can see the team in a diamond formation and they are turning left after that marvelous loop. Ladies and gentlemen, starting with the introductions, our commanding officer is Group Captain Anup Singh, Vayu Sena Medal, and he leads as number 1. Flying in number 4 is Naughty and flying as number 7 is Bhatt. They form the spine of all formations, whereas even numbers 2, 6 and 8 form the right flank and the odd numbers 3, 5 and 9 constitute the left flank of the formations. Coming in from your left, you will soon see them in the Sekhon formation. This display marks the Swarnim Vijay Varsh, or 50 years since the war of 1971. How can we do that without the NAT aircraft? The Surya Kirans approaching from your left in shape of the NAT aircraft. This aircraft is also popularly known as the Sabre Slayer and was flown by late flying officer Nirmal Jeet Singh Sekhon, Paramveer Chakra posthumous. The observers today with us are Squadron Leader Bhalla and Squadron Leader Himanshu. Their aim today is to ensure a safe display. And as you can see straight ahead, the team has changed into an arrow formation. Flying to the right as number 2 is Udit, as number 6 is Garg and as number 8 is Navjot. Soon you will see the team changing from the previous arrow formation into a diamond formation right in front of the dais. Ladies and gentlemen, look to your left as the outermost members will tuck in soon to form a diamond in the skies. This beautiful diamond is dedicated to all the beautiful ladies in the audience today. Flying on the left flank are number 3 Atul, number 5 Bodo and number 9 Sully. अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 9 जहाज इतनी पास परफेक्ट सिमेट्री में कैसे उड़ पा रहे हैं, तो उसका जवाब देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी टीम का हर एक पायलट एक फाइटर पायलट है और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी। टीम ज्वाइन करने से पहले 1 हफ्ते की सिलेक्शन ट्रायल्स के दौरान टीम लीडर द्वारा इनका चयन किया जाता है।
बिना रुके बिना थमे हमेशा अभ्यास करती है हमारी टीम, ताकि अपने मूल्य सिद्धांत सदैव सर्वोत्तम ऑलवेज द बेस्ट को चरितार्थ कर सके। And soon approaching from your left, you will see the team in Gaganyaan formation. ये formation है इंडिया के ह्यूमन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को। Ladies and gentlemen, from your left, the Gaganyaan formation. Since the inception of the team, we have achieved many laurels, like being the only 9-aircraft military aerobatics display team in Asia. We also covered a Southern India flypast to mark the Swarnim Vijay Varsh. We will soon be covering the rest of the beautiful skies of the country in the near future. To know the latest schedule of flypast and schedules, you can follow us on Facebook, Instagram and Twitter on Suryakiran_IAF. Ladies and gentlemen, look at the smoke trial to your left. The team is approaching you in the fulcrum formation, named after the famous MiG-29 aircraft. You won't get it tonight, 'cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. This team has carried out over 500 displays in 72 cities across India, from Srinagar to Thiruvananthapuram and from Naliyanda West to Chabua in the east. We have also left a smoke trail on the world map, with displaying in Sri Lanka, Myanmar, China, Laos, Thailand and Singapore. टीम अब आपको दिखेगी अपने बाईं ओर और ये पोजीशन करेंगे एक बैरल रोल के लिए रिटायरमेंट फॉर्मेशन। बैरल रोल समझाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि they will form a forward moving spiral in the skies from your left to your right, and watch them as they are closely tied together with an invisible string, not moving away from each other for a moment. Ladies and gentlemen, strain your eyes to your left and you will soon see the smoke coming out from your left for a diamond barrel roll. Ladies and gentlemen, a little right from the fort, you can see the team commencing a barrel roll, glinting in the rays of the sun. To keep this aircraft airborne is not a small feat, and the credit goes to our maintenance team. हमारी मेंटेनेंस टीम जो कि रैना, सूरज और शाम के नेतृत्व में इन जहाजों को हर बार उड़ान के लिए तैयार रखती है। और आज जो आप दूसरी आवाज सुन पाए वो थे हमारी मेंटेनेंस टीम के लीडर विंग कमांडर रैना की।
यम करतब तोह इमन 15 मिनटन वुचूक तिमन मुकम्मल करने खतर सन टीम रेतवादन तैयारी करान। यह सान खतर अख यस्तुक सवाल कि सन टीम दुनियाहस मज 9 जहाज इकवटे उड़ावन वाजिन अख पेशेवर टीम। Paying tribute to all the heroes on Swarnim Vijay Varsh and Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Surya Kiran team will soon be approaching right in front of you in shape of a NAT aircraft. Look up straight ahead कैसे लीडर की कॉल पे टीम चारों ओर सूर्य की किरणों की तरफ फैल गई है। Ladies and gentlemen, look straight ahead. लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसी के साथ हम फर्स्ट हाफ के अंत पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम आपके लिए अब पेश करेंगे मनूवर्स छोटी फॉर्मेशंस में, तेज स्पीड और कम हाइट पे। वुनुक ताम वुचू तोह यम सारी 9 जहाज इकवटे तोह लुत्फ दिवान, मगर मैं अगर तय गौर फरमायू यम जहाज इन लक्टन फॉर्मेशनन मज तोह दरमियान। अशु यकीन कि यम सारी जहाज यल जन तोह वुचूक इम दिनो तोह सनसनी खेज परफॉर्मेंस तो इम करतब वुचित यो तोह वारियाह मज। We were earlier flying at 150 meters, but now as promised, we are bringing the thrill closer to you. The aircraft will be flying at a mere 30 meters above the ground. This is the lowest and the closest that you will see the Surya Kirans flying. Ready to give you a spine-tingling, blood-gushing, hair-raising experience, NJ, Sully and Garg for synchronous rolls from your right. Keep looking right, ladies and gentlemen, at the smoke trail as they keep approaching from your left. You can see 5 aircraft. That is the mountain formation, and this formation is dedicated to the indomitable spirit of the people of Kashmir who have conquered the Himalayas and are truly staying in paradise on earth. Ladies and gentlemen, keep looking at the Alpha with his boys, and coming next is a surprise for you. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for the Alpha and his boys? And that was number 5, Bodo, piercing right through the Alpha, showing his prowess, perfection and skills. नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए मेरे पास सभी के लिए एक सवाल है। अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आपको एक स्मोक ट्रायल दिख रही होगी।
जो लोग एक जहाज देख सकते हैं वो एक हाथ उठाएं और जो दो देख सकते हैं वो दो हाथ उठाएं। सबको हैरत अंगेज करते हुए ये थे That, ladies and gentlemen, was the hidden split maneuver done by NJ, Sully and Garg. Ladies and gentlemen, soon you will see 3 aircraft. If you can spot them right now, they are approaching from your left to your right. That is the team leader number 1, number 2 and number 3. Number 2, that is Udit, will be drawing circles around number 1 and number 2. Keep looking as they take a turn and they will approach you from your right. And then there are, ladies and gentlemen, straight ahead of you with the drawing circles around 1 and 2. I must say, such an Instagram-worthy moment. Coming to the last maneuver of this display, we want to give you a proper goodbye. So soon you will see NJ and Sully doing the same with the statement, "Ye dil mange more." ख्वातीनो हजरात, अस यकीन कि तुंद खतर यह हवाई नुमाइश पेश कर यह आयो तो वारियाह पसंद। सून अहम मकसद छु नौजवानन तो लक्टन लक्टन शुरन वत हावन तिमन यह एहसास दुन कि तुह ते हेकियो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करित तो पनन पनन ख्वाब पूर करित। सान खतर ओस यह वारियाह खुशी हुंद मौक कि तुह दरमियान हेक अस आज यथ एयर शोस मज हिस्स नित। तो अथ सत करो अस तुह शुक्रिया तो हमो तुह इजाजत। Namaskar, Khuda Hafiz, Jai Hind. Handing over to the Air Force commentary team. देवियों और सज्जनों, इंडियन एयरफोर्स जीने का एक तरीका है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ।
12वीं कक्षा के बाद अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कई लेवल के एग्जाम हैं। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम से भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो साइंस के साथ मैथ या इंजीनियरिंग होना जरूरी है। यह सिर्फ एक भ्रम है। आप किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं या ग्रेजुएशन करते हैं तो भी आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकते हैं। अफवाहों पे ना जाएं। सटीक और सही जानकारी के लिए वेबसाइट www.careerairforce.nic.in पर दिखाई जानकारी को ही सही माने। बच्चों दिल थाम के बैठिए, अभी एक और आइटम प्रोग्राम का बाकी है जो है चिनूक, और उसके बाद बैंड भी आपके लिए प्ले करेगा। देवी और सज्जनों, आपने हेलीकॉप्टर तो कई देखे होंगे, लेकिन उन सब में सिर्फ एक ही ऊपर घूमता हुआ रोटर पंखा देखा होगा। आज आपके सामने आने वाला है एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर एक नहीं 2 रोटरी पंखे हैं। Ladies and gentlemen, next we have an enthralling display of maneuvers planned by the Chinook helicopter. The Chinook helicopter is a twin-engine, tandem rotor helicopter manufactured by Boeing and is one of the most versatile machines ever made. This game-changing modern marvel is capable of performing transport operations, underslung operations, winching operations, medical evacuation and airdrops. Chinook is an all-weather aircraft which is capable of carrying out all the roles under the cover of darkness.